11% irregularity. You should be 100% compliant boy, compliant girl, right? बन देखिए. और ये कौन है? अवनीश. अवनीश. और श्रीनिधि. श्रीनिधि का है एब्सेंट. नेहा तुम एब्सेंट हो. प्रेजेंट थे. 53% मिला. 28 मई का एग्जाम. Which exam was that? दोनों था. केमिस्ट्री में आपने एक ही सब्जेक्ट लिखा क्या? 53. श्रीनिधि को 80% मिला है. ठीक है. अभी एकदम पूरा जुट जाओ पढ़ाई में, क्योंकि ये पोर्शन जो है it is going to increase and you will have more number of chapters in one stretch, isn't it? आपने दिया एग्जाम. Your name has not come. क्या नाम है आपका? जूही. जूही आपका इधर नहीं है. मार्क्स दिया. Have you done the exam? Given. What about you? क्या नाम है आपका? श्रेया. आपका भी नाम नहीं आया इधर. You are absent for the exam. तो मार्क्स क्यों नहीं आया इधर? हाँ. ओके. और किसका नहीं आया? आपका नहीं आया ना? What's your name? Shraddha, your name has not come. Means what? And here comes. तुम्हारा क्या नाम है? आर्यमन. आर्यमन तुम्हारे में नाम नहीं है. You did not give any exam. How much you got? Marks नहीं मिला. याद नहीं है. याद करो. Again I come back. तुम्हारा कितना मार्क्स मिला आपको? याद नहीं आ रहा. इसी से लेंगे. और तुम्हारा पास 80% मिला तुम्हारा. इसमें नाम नहीं आया आपका. यू क्या नाम है आपका? भरत. कितना मिला आपको? 65. बस. You are doing science and maths. 100% आया. तुम्हारा कितना है? क्या नाम है आपका? राजदीप. तुम्हारा आया इधर 87%. 5% irregularity. टॉपर 90% मिला. टॉपर परसेंटेज तुम ही हो लगता है. 90%. राइट. अगर क्लास में टॉपर डिवाइड करते ही है, you can also come to that particular point. Yeah. Start working on it. कितना तक किया है? Is matter around us pure? वो वाला चैप्टर चल रहा है ना? कितना तक हो गया था? Till what we had done? What 2 points? The first and second ही कर सकते हैं. Today इधर तक किया हम लोगों ने. Solution का concentration हो गया सब. सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ये सब हो गया है. ठीक है. अब हम लोग आते हैं फॉर एग्जांपल how to separate the mixture. उसके पहले we'll see one video. Is the compound or is the mixture actually what? For example, pure. So for that, okay, there are some, for example, how to separate. ये वाला part बात की. How to separate various composition or constituents or substances from the mixture. ठीक है ना?
हम लोग को क्या वेरियस कंपोनेंट जो है, फॉर एग्जांपल हाउ टू सेपरेट देम. फॉर दैट, फॉर एग्जांपल इफ यू सी, इफ आई वांट टू सेपरेट ink from, let us say dye, this I want to remove the dye from the ink, then we can go for the process called evaporation. If I want to separate, for example, okay, let us say the cream from the milk, so I will have to rotate it very fast. That is called as what? Centrifuging. जैसा आप जोर से वो मंथन करते हैं तो क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाते हैं, और उसका जो फैट है, यानी जो लाइटर फैट है ऊपर आ जाता है, ठीक है, और जो हेवियर फैट है या हेवियर मटेरियल वो नीचे चले. ओके, व्हाट इज दैट कॉल्ड? क्रीम. आई वांट टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. व्हाट यू डू? यू churn it. Churning is nothing but what? Centrifuging. Likewise, our washing machine. What washing machine does? After cleaning the clothes, what actually happens? You put in the dry tub. या उसमें ऑटोमेटिक रहेगा तो ड्राई टब में ही है, तो क्या होगा, पानी थोड़ा अंदर लेगा, रोटेट करेगा विद अ वेरी हाई स्पीड, द क्लोथ्स विल कम डाउन. Clear? Of course, I will draw the diagram, and the water with the dirt will go out. Why? Water is lighter, so it will go out. And those, the clothes which are there, they will just, for example, get entangled in that particular washing machine, indicating they're denser, तो नीचे बैठ जाते हैं. और जो पानी का जो dirt है और पानी बाहर निकल आता है small holes से, and that is coming from the outlet into the sink, we can say. Yeah, for example, the outlet from where the pipe is actually connected. So वो centrifuging board. Likewise, for example, if I want to separate, let us say, for example, some insoluble substance, clear, from the solution, then that process is called as what? Filtration. Filtration. जैसे अभी तुम्हारे को सैंड है ना, पानी में चला गया, अब तुमको पानी पीना है तो क्या करोगे? फिल्टर कर दो उसको. ठीक है, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे I want to purify a solid, and that process is called as what? Crystallization. If I want to purify liquid, then it's called as what? Distillation. Distillation is purification of liquid. Okay, then of course, for example, if I want to actually what? Go for some kind of plant pigment separation, जैसे इसमें क्लोरोफिल रहता है, xanthophyll रहता है green plants. अगर हम लोग को उसको separate करना है, तो we'll take the plants, we'll put some water, make a slurry of it, and put in the column containing what? A material which will try to stop those substances. It means they will try to stop, those materials which are solid. One will actually what? Will not show that particular affinity for the substance, so it will drive itself down. And the other substance which is having more affinity for that material, that is solid particles in the column, will remain up. So you will find two colored bands, okay, in that column. That process is called as what? Chromatography. Chromatography is nothing but related with what? Some chroma. Chroma means color. Chromatography technique. फिर एक और एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू सेपरेट, सपोज तो ऑयल पानी में चला गया है, अब ऑयल को पानी से सेपरेट करना है, कैसे? आई वांट टू लेट अस से लाइट अ लैंप, उसके लिए ऑयल ही चलेगा, अब उसमें पानी चला गया है, अब पानी में क्या होगा? वो दिया बुझ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए देयर इज वन मेथड कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल. इस सेपरेटिंग फनल से हम लोग क्या करेंगे? ऑयल को वाटर से सेपरेट कर देंगे. Remember, separating, वो भी सब diagram I'll show you. But before that, यहाँ पे हम लोग एक वीडियो देखते हैं, which will be very useful for you, so that you'll be able to enjoy this video. Let us see. अब क्या करना पड़ेगा इसमें? Stop sharing ना? Got it. ठीक है, अब इसको stop कर दो. तो यही नहीं ना participate. अब आते हैं हम लोग YouTube प्लेटफॉर्म. यहाँ पे YouTube प्लेटफॉर्म थोड़ा just excuse me. YouTube आ गया, हाँ, YouTube इधर है. Good. अब YouTube में अपने को क्या करना है? We have to go for separating. क्या करना पड़ेगा ना? Separating
The constituents क्या लिखा है? Constituents 17, right? Constituents from heterogeneous mixture. आगे क्या कुछ? Mixture, good. हाँ, अब आते हैं इधर गया। ये वाले लेते हैं, हाँ साउंड आएगा ना इसका? गुड। Hey, head of marketing at a pepper company about to use Grammarly to handle the time. How do we separate cream from milk? How about salt from seawater? Well, many of the substances we use every day are actually mixtures, which are made of 2 or more different substances. In this video, we will explore 10 common methods of separation in chemistry. Number 10, separating funnel. Separating funnel is used to separate 2 immiscible liquids with different densities. Immiscible liquids are those which won't stay mixed to give a single phase. Oil and water. Oil and water can be easily separated using this technique. Oil floats on top of water, separating into 2 layers. Water layer then can be drained into a container by opening a stopper. यहाँ पे एक स्टॉपर है जो ओपन करने का, देखो ऊपर पहले ऑयल है उधर वाटर और इधर एक कैप रहता है। पहले उसको कॉफी जैसा कॉफी शेक रहता है ना, हाउ वी शेक दैट, जैसे ऐड करते हैं कॉफी, कोल्ड कॉफी बनाने के टाइम यू शेक इट ना, सेम वे इसको शेक करना है। Then you add, so any droplets of oil here will go up, any droplets of water will come down, और फिर उसको एक particular support पे रख दो for some 2 minutes or 3 minutes. So अपने आप वो separate हो जाएंगे. Then what you will do? You will open the stopper. Number 9, filtration. ये समझ में आया ना ये? Filtration is a method for separating an insoluble solid from the air by opening a stopcock. इसमें दिखना नहीं है, ये लिक्विड यहाँ तक जाएगा तो ये ऑयल आ गया, राइट ना? फिर what will do? We'll close the tap, okay, and then finally remove this beaker, replace this beaker by another beaker in which will collect the oil. और जो बीच वाला जो कंपोनेंट यानी जो मिक्सचर रहेगा उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा ऑयल और वाटर वेस्ट होगा। रिमेंबर व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा ऑयल पानी आपको दिखेगा तो वो यानी 3 आपको रिसीवर रहेगा। फर्स्ट रिसीवर में आपको वाटर मिलेगा, सेकंड रिसीवर में ऑयल एंड वाटर मिलेगा, यानी ये बाउंड्री पे, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से यू कलेक्ट द ऑयल, देन दैट कैन बी यूज्ड फॉर द बर्निंग दैट विक, ठीक है, लैम्प। Number 9, filtration. Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid. Take, for example, the mixture of sand and water. When the mixture of sand and water is filtered, the sand stays behind in the filter paper and it becomes the residue. ये तो पानी The पी water सकता has to do with the filter paper and it becomes the filter sand. I mean Various filtering agents can be used, like filtering paper or other material. ये ऊपर फिल्टर पेपर है और ऊपर ये जो सब्सटेंस रहेगा दैट इज एक्चुअली व्हाट फिल्टर है ऊपर, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट रेसिड्यू, और जो नीचे आ रहा है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो फिल्टर होके नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड फिल्टरेट। One of the very important filtering material these days is a mask. Our mask, By right? wearing a proper mask, viruses will be filtered and stay outside of the mask. Right? Only the clean air Only is clean air filtered. If you want to find out more about filtration process, you can watch my previous Any video kind of called filtration. Because Please pores click the are very link small. above. Number 8, sedimentation. This is very simple. Sedimentation is the process of separating the insoluble solid from the liquid. Now, heavier particles present in liquid normally settle down at the bottom of the container. The process, however, takes some amount of time. Number 7, distillation. When mixtures consist of 2 or more pure liquids, distillation. यहाँ पे प्योर लिक्विड रखेंगे, इसको डिस्टिलेशन प्लांट ऊपर थर्मोमीटर रहेगा, जैसे कंडेंसर हो गया, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोल्ड वाटर भेजेंगे, इट विल सर्कुलेट एंड कम फ्रॉम हियर आउट, ये सिंक में जाएगा, ये टैप में कनेक्ट हो, देयर इज अ काइंड ऑफ रिसीवर यहाँ पे रिसीव करने के लिए
that liquid which is going to be heated. Now, if there are two liquids, one is having a boiling point of, let us say, 100 degrees Celsius, other is having a boiling point of 56. So the basis of difference in the boiling point, we carry out this process of distillation. तो क्या होता है, जो liquid 56 है, पहले वो boil होगा, यहाँ पे आएगा, but यहाँ पे cooler condition, जैसा AC में अभी बैठे हैं, we feel cool, but outside like roasting, सब roast हो रहे हैं, ठीक है ना, बाहर ऐसा गर्म जैसा तवे पे चल रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है, ठीक है कि नहीं? तो वो क्या होता है, वहां पे हम लोग जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि अपना पैर जलने लगता है, स्पेशली बॉडी में, as if somebody is actually what is heating that land from below, ठीक है? But now what is that, and this is happening because our roads are concretized, heat अंदर penetrate नहीं हो रहा है, क्यों? porous नहीं है, एकदम hard solid है, तो जो sunlight का heat है सीधे अपनी तरफ रिफ्लेक्ट होता है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा अभी हीट फेस करना। तो यहाँ पे वाटर कंडेंसर इमीडिएटली इसको बोलते हैं लिबिक कंडेंसर आल्सो। यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, दैट पर्टिकुलर वेपर गेट्स कंडेंस्ड एंड when it comes over here, it's a cooler part, it has got condensed, you'll find some droplets trickling down. That is nothing but first liquid. The temperature shoots up from 56 to 100, जैसे shoot up होगा 100 तक, यानी जैसे 56 से चेंज हुआ, ये रिसीवर को हटा दो, दूसरा रिसीवर ले लो। 70-80 पे कुछ लिक्विड आपको दिखेगा, 80-90, जैसे 100 आया, 100 पे 2-3 ड्रॉप आने दो नीचे, that is nothing but mixture of these two liquids. Then receiver C is that liquid which is boiling at 100 degrees Celsius. Okay? Distillation method can be used. In distillation procedure, the round bottom flask contains the liquid mixture which must be heated to a vigorous boil. The components with the lower boiling points will change into a vapor. The vapor moves through a condenser. The vapor condenses and is collected in a liquid state. The other liquid component remains in the round bottom flask. If you want to find out more about distillation, you can also watch my previous video called Distillation. Please click the link above. Number 6, evaporation. Evaporation is a separation method that involves evaporating the solvents in the mixture. In this method, the solution is heated until the organic solvent evaporates, where it turns into gas and mostly leaves behind the solid residue. Once the liquid is completely evaporated, the solid is all that is left behind. An example of this is a salt and water mixture where the water can be evaporated in order to leave the salt behind. Did you know that most of the salt that we use come from South Africa? Well, South Africa gets its salt from inland salt pans, coastal. South Africa maximum amount of salt. So high tide में water comes inside. There are big pans. Okay, these big pans are called bunds also. Bunds, जैसा एक partition जैसा, ठीक है? और bunds में आके पानी रुक जाता है. Sunlight जो यहाँ पे है, sun है, ठीक है? वो क्या कर रहा है? Water को evaporate कर रहा है. Water starts moving towards, the vapor starts moving towards the sun, and finally after some time the solution becomes super saturated. You find some white particles or greenish particles of salt generated. Because sea में हमेशा salt रहता है. Salt pans Maximum. and seawater by using the evaporation process. A salt pan is a shallow dam in the ground where salt water evaporates to leave a layer of dry salt. Number 5, steaming. Steaming is used to separate mixtures that contain substances mostly of different sizes. Different size. You The want to make mixture is passed through the core. ये एकदम gross kind of substance आपको एकदम powder form में चाहिए. ये sugar का बड़ा particles को आपको नहीं लाना है उसमें. ये like समझो making some मिठाई, okay, और उसमें एकदम fine powdered substance चाहिए, powdered sugar. तो आपको क्या करना है? Powder कर दिया है पहले, but still you are not satisfied. Why? Because then when you are eating that sweet, you will get that grainy substance also. But you want very powdered form, ठीक है ना? तो आपने को क्या करना है? Sieving. जैसे अपना चाय छानते हैं, sieving वैसे ही है, ठीक है? Of the sieve. The smaller substances pass through easily, while the bigger components of the mixture are retained. Number 4, magnetic separation. Yes. When one substance in the mixture has some magnetic property. This is used in extraction. ये इसमें नहीं आ रहा है, but तुमको जब higher 10th में ये part आएगा. Suppose for example you are having an ore which is a compound of metal which is to be extracted. Now that ore contains impurities. Now impurities are magnetic, but ore is non-magnetic.
या वाइस वर्सा, तो आपको वो सेपरेट करने के लिए कैसे करना है? Then this method can be quite It's a metal industry. Strong magnets are commonly used to separate magnetic elements. ये roller है. Well, how does magnetic separation work? ये भी For animation. example, mineral ore that contains two compounds, one magnetic. यहाँ से ऑपर से वो पास करते हैं magnetic and non-magnetic substances. This is a magnetic substance, okay? तो क्या होता है जो magnetic substance रहता है चिपक के यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे heat form करता है, और जो non-magnetic is being thrown. Why? There's no magnetic kind of attraction towards this magnetic roller. So that means you form two heaps. So the one which is away from that particular magnetic roller, away from that is non-magnetic, and the one which is closer to that, below that is magnetic. तो उसमें ore या magnet जो impurities है, so that means the impurities and the ore means what? Metal compounds from which metal can be extracted. ठीक है? तो ये of course नहीं है, just can be separated using this method. The ore grains are fed onto a revolving belt. The roller at the end of the belt is non-magnetic. This means that all the magnetic grains in the ore will stick to the belt when it goes around the roller, while the non-magnetic grains will fall off the end. As soon as the magnetic grains move past the magnet, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे hopper, यहाँ से हम लोग और ये impurity पास करते हैं. अब ये रोल होता जाता है, और ये बेल्ट है, जैसे अपना एयरपोर्ट में देखा होगा आपने, बेल्ट, रबर बेल्ट जिसपे लगेज रहता है और मूव करते रहते हैं. कस्टमर्स, पैसेंजर्स आर नॉट सपोज्ड टू मूव, लगेज आपके पास में आएगा. तो वैसे यहाँ पे ओके, जैसे और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो जैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस है तो जो एक्चुअली वो नॉन मैग्नेटिक ठीक है, क्यों? क्योंकि नो नॉन मैग्नेटिक, बट जो एक्चुअली मैग्नेटिक है तो चिपक के इधर है, फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है या उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, तो यहाँ पे अपना तो यू विल फाइंड वन कीप ओवर हियर, अदर कीप ओवर हियर. तो जो दूर है वो नॉन मैग्नेटिक, जो पास में है वो मैग्नेटिक. इधर थोड़ा सा बहुत क्लोज बता दिया गया ने, बट एक्चुअली स्टार्ट थ्रोइंग इट आउट, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई अपना सपोर्ट नहीं है, इनर्जी इज देयर, जस्ट थ्रो इट स्ट्रेट. magnetic roller, they will also fall down. Number 3, crystallization. Crystallization is an evaporating technique that works to form crystals of the solutes. Number 2, chromatography. Chromatography is a method for separating colored substances into individual colored bands. It is quite versatile to separate mixtures of solids or of liquids, or mixtures of solids and liquids combined, or mixtures of gases in the case of gas chromatography. The name chromatography comes from the Greek word chroma, meaning color, and graph, meaning to write. The two elements of chromatography. The other color indicate different components. This is especially in the marker. ये जो मार्कर है ना, इसको हम लोग एक पोरस एक स्ट्रिप लेंगे पेपर का, which is porous, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल देंगे, and then we keep this, यहाँ पे इधर लिखा नहीं एक्चुअली, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं पेंसिल से और इसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे, and then it is actually what just filled up, water is filled up over there, and this porous paper वो वाटर को खींचता है, just like soaks. जैसे अभी आप एक वाइपर रखेंगे और पानी थोड़ा दूर है, जस्ट उसको टच करके रखना है, तो क्या होगा, पूरा पानी सोख लेगा. वैसे यहाँ पे it also soaks that water, but ये जो इंक ड्रॉप यहाँ पे रखा है आपने, वो starts moving up. So solvent उसको ऊपर लेके जा रहा है, but ये जो पेपर है उसको रोक रहा है. तो अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग स्पॉट्स मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स. अभी इधर तो कलर फॉर्म हो गया है, and they are showing for example, look at this yellow color, blue color, ठीक है, फिर रेड कलर. That means these different colors means different substances. याद रखना. Are the stationary phase and the mobile phase. The mixture is placed on the stationary phase. The mobile phase, a mixture of solvents or diluents over the mixture and continues to pass through the stationary phase, carrying along the components of the mixture. Why are the different pigments carried at different speeds? Well, pigments migrate at different speeds because of differences in their properties. Large pigment particles tend to move slowly. Yes. Furthermore, particles that dissolve well in the liquid will tend to stay in the liquid and be carried to the top quickly, while particles that bind well to the paper
will tend to move slowly. Paper chromatography is often used when the dissolved substances are colored, such as ink, food colorings, and Food plant color. dyes. Plant A dyes. pure substance dyes will only produce one spot on the chromatogram using ये देखो यहाँ पेपर हम नीचे रखा पानी उसको खींच रहे और जाके ऊपर ऐसे कलर स्पॉट्स ठीक है अगर एक ही कंपोनेंट है एक ही कलर paper chromatography. Two आजकल substances फूड will be कलर्स the क्या same. है व्हाट इज फूड कलर्स फूड कलर्स आर नथिंग बट व्हिच आर एडिबल कलर्स जैसा पाव भाजी में आपको रेडनेस क्यों चाहिए सर बहुत टेम्पटिंग लगेगा बहुत तीखा चाहिए मुझे तो क्या करते हैं वो रेड पाव ये पाउडर डाल देते हैं व्हिच इज फूड कलर है so this business is actually now growing up people have started with food color business means like for example अगर तुमको ज्यादा फॉर रेडिश सब्सटेंस चाहिए मिर्ची की जगह पे ये सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे कि सबको लगे अरे बहुत ज्यादा टेस्टी एंड स्पाइसी रहेगा तो आजकल फूड कलर बिजनेस है which is again so I want to identify whether these food colors are actually what harmful for us or not or how many type of components are there so we can use chromatography If they produce the same color on the spot, and their spots travel the same distance of the paper. ये पेपर है Number 1, centrifuge. In some cases where the solid particles are too fine to be separated with a filter, a centrifuge let's is sample used. Centrifuges are mechanical devices that spin at very high speeds. These high speeds allow the solid particles in suspension to settle very quickly. इसके अंदर रख के For example, rather than waiting for blood samples to slowly settle, a centrifuge can be used to separate blood It's like our into washing machine. plasma and red blood कपड़ा cells रखो अंदर in a matter of seconds. see this Other examples of how centrifuges are used ये क्या है चला गया क्या अच्छा आगे पीछे चलो yes on the spot, and their spots travel the same distance up with paper. Number 1, centrifuge. In some cases where the solid particles are too fine to be separated with a filter, a centrifuge can be used. Centrifuges are mechanical devices that spin at very high speeds. These high speeds allow the solid particles in suspension to settle very quickly. For example, rather than waiting for blood samples to slowly settle, a centrifuge can be used to separate blood into plasma and red blood cells in a matter of seconds. Other examples of how centrifuges are used include separating cream from milk and separating uranium isotopes for nuclear power plants. Well, that's it for today. Thank you for watching. अरे ना कहाँ पे जाने का थैंक यू फॉर वाचिंग राइट बहुत ही अच्छा बोला प्लीज वॉच इट नाइस एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं ये किया था कि नहीं ये वाला वो बच्चा अपना फुटबॉल लेके आता है कर दिया उसमें बहुत सारे एक पार्ट है Four or more substances in the same phase. This is formed when a solute dissolves in a solvent. A solution can also be formed when two or more miscible liquids are mixed together. When ethanol and water are mixed together, a solution is formed. Now, how would we separate these solutions? To separate dissolved salt from water, we would simply evaporate as much water as possible, leaving behind white salt crystals. The separation technique is known as evaporation. To separate ethanol from water, we must take into account the fact that these substances have very different boiling points. Water boils at 100 degrees Celsius, whereas ethanol boils at 78 degrees Celsius. This mixture can be separated by simple distillation. The lower boiling point component, in our case, ethanol, will evaporate first.
The ethanol vapor condenses as it passes through the condenser, and the distilled ethanol can then be collected in the receiving flask. The above mixtures are homogeneous mixtures. This means that the components of the mixture are in the same phase, or the composition of the mixture is uniform throughout. Now, we will look at separating heterogeneous mixtures, where the components in the mixture are not in the same phase, or the composition of the mixture is uneven. If we have a mixture of sulfur and iron filings, we can easily separate this mixture with the magnet. The magnet will remove all of the iron filings, leaving behind the yellow sulfur powder. We know that salt is completely soluble in water, but sand is not. How would you separate a mixture of salt and sand easily, keeping in mind the solubility of salt in water? Pause, think, and continue when you have an answer. The salt and sand mixture can be added to water. Salt will dissolve, but sand cannot. The resulting heterogeneous mixture can be filtered through a funnel lined with filtration and washed with water to remove as much salt as possible. The substance that remains on the filter paper is known as the residue, and the substance collected in the flask is called the filtrate. For our case, sand is the residue, and the salt water is the filtrate. The salt can be obtained using evaporation and is then left to dry. The same method is used to separate a suspension, which is a mixture of an insoluble solvent in a liquid, such as, for example, small bits of chalk in water. Two immiscible liquids, such as oil and water, can be separated using a separatory funnel. This is an apparatus with a stopcock at the bottom. Releasing the stopcock allows the contents to flow out, and closing it stops the flow. To summarize, there are many different techniques to separate mixtures, all depending on whether the mixture is homogeneous or heterogeneous. Yes. ठीक है ना? हो गया. Good. दोनों वीडियो समझ में आया? अब हम लोग इस पे जाएंगे. इस पे ये है ना सेपरेटिंग वाला. चला गया? अब कौन सा आ रहा है? Very good. So can you see your faces? Good. Now all of you will start working on this, this particular part. यानी यहाँ पे डायग्राम हम लोग मैंने ऐसा बनाया है. आपको डायग्राम कहाँ से बनाना है वो मैं बता दूं. First, let us read the content. Gurpreet, 2.2 activities. पहले क्या करना है? एक मिनट. Turn to this particular page. How to separate the components of various components. कहाँ लिखा है वो? Point. हाँ? कहाँ लिखा है वो? Yes. वहाँ से. चलो. सबसे पहले पढ़ेंगे आप. बोलिए. कहाँ से पढ़ना है? हाँ. Separating the components of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, cleaving, integration that we use with our day-to-day life. How can we obtain color component dye from blue and black picking? Yes. We find that ink is a mixture of a dye and water. Thus, we can separate the volatile component means which can escape easily from its non-volatile solute by the method of evaporation. How can we separate cream from milk? Yes. Nowadays, we get full cream, toned and double varieties of milk packed in the poly packs or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amount of fat. Sometimes the solid particles in the liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation.
Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when Spun with a very high speed. spun rapidly. By this method, we can separate cream from milk. Cream being lighter flows on top. Applications used in diagnostic laboratories for blood and urine tests. Yes. Used in dairies and homes to separate butter from ghee. Used in washing machines to squeeze out water from wet clothes. बहुत आपने पढ़ Okay. सुनो अभी मत पढ़ो. She has read nicely. Only thing is, I will just try to show with very crude way of for example the diagram. Why? Because we are not using scale and other thing. सबसे पहले chromatography अब बाद में लेते हैं. सबसे पहले evaporation. How we evaporate? We take for example a porcelain dish, and what we do, we try to take that salt water, and I want to separate the salt from water. I heat it, and I find for example when the level of this water, okay, becomes half, then what happens? ठीक है, ये धीरे धीरे आपको salt दिखाई देना शुरू होगा. You off it, off the burner, cool it down, you'll find some crystals of salt getting developed. Evaporation. Likewise, suppose you want to find out the dye, you want to separate this dye from the solvent. Okay, तो आप क्या करेंगे? एक watch glass लेंगे और ये watch glass में अपना वो ink थोड़ा सा drop डाल देंगे, एक दो तीन drop, and then you just below that you keep a beaker partially filled with water and heat it. Due to this particular, for example, heat, this ink remains over there, dye, and the solvent evaporates because that is more volatile. More volatile means having low boiling point. So वो निकल जाता है, थोड़ी देर के बाद आपको dryness मिलेगा उधर, ink color. ये अपना evaporation. Then centrifuging. Centrifuging means rotating some, for example, some component with a very high speed, spinning with a very high speed. ठीक है ना? Okay. Now, जैसे for example, तुमने देखा होगा, there is one game which is bull game. वो बुल के ऊपर बैठना पड़ता है और वो ऐसा घूमता है इधर उधर, राइट ना? और तुम चक्कर खा के गिर जाते हो. व्हाट इज दैट? लाइक बुल के ऊपर आप अगर कोई ये कौन सा हुआ है अम्यूजमेंट पार्क पे जाओ, वहां पे है ना सेंटर में रहेगा वो, और नीचे देयर इज अ काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी काइंड ऑफ कनेक्शन. दैट बुल पीपल दे स्टार्ट सिटिंग ऑन इट एंड दे शुड नॉट फॉल डाउन. क्लियर? इट्स लाइक अ टेली गेम आल्सो. पहले का टेली गेम में रहता था. Okay, now then they start running that and that spool starts spinning. आपको spinning इतना ज्यादा नहीं because it's very heavy, but यहाँ पे हम लोग spin करते हैं. तो यहाँ पे जो कपड़ा अंदर है washing machine में, ठीक है, ये देखो ये पैंट है, ये अपना शर्ट है, suppose just an example, ठीक है, और पानी जो है यहाँ पे पूरा water is there. Now whatever dirt it has carried, water has carried, start throwing out. Look at this. बाहर फेंकना शुरू कर. Right? थोड़ा सा ये funny है, but and then what happens? ये जो पैंट है या ये शर्ट है वो यहाँ पे जाके चिपक जाता है. Yes or no? Why? Because finally what happens? They're heavier. So heavier things will start falling down and the lighter particles will move. Dirt, पानी के साथ वो जो dirt है वो निकल जाता है. And then finally, yes, entangle हो जाते हैं. कौन सा शर्ट है कौन सा पैंट है मालूम नहीं पड़ रहा है. फिर आपको उसको निकालना पड़ता है. फिर देखना this is my shirt, this is my pant. Just an example. तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ये एवरीडे लाइफ सिचुएशन नया, राइट ना? ओके, नाउ अब ये देखो ये क्या है? ये गाजर नहीं है, ये सेपरेटिंग फनल है. बिकॉज सब लोग शॉर्ट फॉर्म में बता दिया क्योंकि इधर से. ओके, अब इसमें क्या है? ऑयल और वाटर. गुरप्रीत बोला सर ऑयल मिक्स हो गया है पानी से, क्या करूं? उसने मुझे फोन किया. मैं बोला अभी क्या कर सकते हैं? एक सेपरेटिंग फनल ले लो, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में उसको पहले तो मिक्स करके रख दिया है और शेक करो, कॉफी जैसा शेक करते हैं ना, कोल्ड कॉफी, उसको यहाँ पे पकड़ के रखो, and then shake it, and then finally what? The oil will actually be like less heavier or less denser, will float up, and so this is oil and this is water. ठीक है ना? बोला अरे मुझे शाम को दिया लगाना पड़ रहा है. For example, I have to light the lamp because electricity नहीं है घर में, तो मुझे शाम को पढ़ाई करना है. लेकिन लैंप ये जो लैंप के लिए ऑयल चाहिए वो उसको पानी में मिक्स हो गया उसमें, अनफॉर्चुनेटली. अभी हाउ टू सेपरेट? I mean sometimes it happens. Then science comes to your rescue. सर कैसे? जो एक सेपरेटिंग फनल लेने का
सेपरेटिंग फनल में ऐसा नॉब या ऐसा स्टॉपर होना चाहिए उसमें, ठीक है। और उसमें क्या करना है, जैसे ओपन करो तो यहाँ ये पॉइंट तक वो इधर लिक्विड आ जाएगा कलेक्टेड, तो वाटर इधर आ गया, ऑयल ऊपर, फिर दूसरा रिसीवर लो, ओके उसमें ऑयल कलेक्ट करो, बट सेकंड रिसीवर में आपको ये दोनों मिलेगा, उसको रिजेक्ट करना है, इतना छोटा सा वेस्ट हो जाएगा। थर्ड रिसीवर ओनली ऑयल, दिस इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, दिस इज वाटर, ये तुम पी भी सकते, नथिंग टू वरी, बिकॉज ऑयल कभी मिक्स नहीं होता पानी में। हाँ, अगर तुमको जरा भी थोड़ा सा शंका है मन में कि सर थोड़ा सा ऑयल रहेगा, उसको बॉईल कर लो, नथिंग टू वरी, बॉईल करके ठंडा करके पी सकते, क्योंकि जब कुछ होगा क्लीन हो जाएगा। एनी ऑयल इज देयर, यू विल कम टू नो कि ऑयल ऊपर आके फ्लोट होगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं, दे हेट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। ऑयल इज अगर ईस्ट है तो वाटर वेस्ट, ठीक है ना। Then Gurpreet says, now sir, I'm relaxed. Why? Oil is there in my house, nothing to worry. ठीक है। Now filtration already we know very well. क्या filtration? Just like when you say, let's say your mother says that, okay, Parth, please prepare a cup of tea. Okay, and for that he prepares some liquor. Okay, tea liquor. और वो tea liquor को अभी उसको क्या करना है? He doesn't want milk in that. So what he does? He takes one filter, sieve, and then finally what? Pours that particular tea liquor inside on it, and finally what happens? The tea leaves remain on that sieve, and what comes down? The concoction, or we can say, for example, that brown color liquid which is tea. Okay, brown tea बोलते हैं ना, it's a brown moonde. वैसे यहाँ पे ठीक है, filtration हो गया। Then you say, sir, I want milk also. तो उसमें क्या अलग से तुम अपने को, लेकिन उसके ऊपर वो सीवर के ऊपर मत डालना मिल्क, टॉप पे डालना है। मतलब है ना, फर्स्ट टाइम व्हेन यू प्रिपेयर such type of, you know, for example, bungling, you do it, ठीक है ना। such type of bungling क्या होता है, तुम कर देते हो कभी, उसको बोलते हैं bungling। अरे सर मैंने बंगल कर दिया, ओके, या bungling बोलते हैं। Have you heard of this word, bungling? नहीं, अच्छा, sir, I bungled my exam. पूरा अपना मलिया वेट कर दिया, ऐसा बोलते हैं। ओके, नाउ सुनो, क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस क्रिस्टलाइजेशन? इसमें ये टेक्निक नहीं दिखा है, वो अभी आई जस्ट शो यू, बट हाउ वी डू क्रिस्टलाइजेशन। सपोज यू वांट टू क्रिस्टलाइज, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी सॉलिड, आई वांट टू प्यूरिफाई, ओके, लाइक सम सॉल्युबल सॉलिड्स आर आल्सो देयर विद कॉपर सल्फेट 5H2। तो इसमें सबसे पहले क्या करता है, एक बीकर लेना है, इसमें क्या करना है, थोड़ा पानी डालना है, और फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट एक पिंच डालते जाए, एक पिंच डालना, स्टर किया, दूसरा पिंच डालना, स्टर किया, till some excess amount of copper sulfate remains, यानी थोड़ा सा बचा है उधर, that is the solution has become saturated। इसको हीट करो, इसको हीट करो सीधे, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कभी-कभी आप शक्कर डालते रहते हैं चाय में, like when you prepare a cup of tea, थोड़ा सा शक्कर ज्यादा हो जाए, nothing to worry, what you do, you heat it, वो शक्कर भी थोड़ी देर के बाद वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे solubility increases। अच्छा, in this hot condition, some insoluble impurities आपको दिख रहा है, कुछ पत्ता है, सब जैसा पानी का पत्ता रहेगा, कुछ ऐसा, कुछ insoluble, any mud particles are there, insoluble, filter it down। फिल्टर का मतलब क्या है, फिल्टर पेपर लेने का, फनल लेना है, उठेगा फिल्टर पेपर, ठीक है, and then just pour this hot condition only, and then finally what, any insoluble impurities, if they are not there, well and good, तो insoluble impurities निकल जाएगा। और ये अपना यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पोर्सलिन डिश में ले लेंगे, चाइना डिश, ठीक है, ये ट्रिकल करके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर। अब इसको क्या करना है, दिस ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, व्हाट यू विल डू, दिस पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट पुट इन द, ये क्या बोलते हैं, वायर गॉस, टेक अ वायर गॉस, टेक अ बंसन बर्नर, टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड, एंड देन व्हाट यू विल डू, you heat it, इसको heat करो। When you heat it, you're trying to make the solution super saturated. And then what you do, once the volume becomes half, time has come that solution might become super saturated. तो क्या करना है, वो जो एक glass rod दिया रहेगा आपको, उसको just insert it and take it out। जैसे आपको few crystals दिखाई देंगे, when you find some crystals getting developed on this particular rod, that means process of crystallization has taken place. Stop heating, okay, take this porcelain dish with a pair of tongs, okay, just like पकड़ जैसा अपने घर में रहता है, उससे tongs रहता है, उसको होल्ड करना है, then कैंची जैसा रहता है, और फिर यहाँ पे ये अपना
थोड़ा सा इसको साइड में सुनो, तो यहाँ पे इसको एक्चुअली व्हाट कूल करने के लिए रख दो। सुनो, एक एस्बेस्टस शीट, सीमेंट शीट रहेगा या टाइल्स रहेगा, आपके स्कूल में टाइल्स दिया रहेगा, उसके ऊपर टेबल के ऊपर मत रखना। क्यों? वेरी हॉट, कभी वो टेबल में कुछ ऐसा मटेरियल व्हिच इज मेल्टेबल थोड़ा स्पॉइल हो जाए, आपको टाइल के ऊपर रखना है। जैसे इसके ऊपर मत रखना, इधर एक टाइल दिया रहेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। सुनो, अब क्या होगा, दिस पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम you wait for some time, okay, allow it to cool, you'll find a beautiful blue crystals getting developed. That small liquid will be there, of course, okay, that liquid is called mother liquor. ये मदर लिकर को रिजेक्ट करना क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज है, तो थोड़ा पानी लेके आपको उसको वॉश करना है, ओके, और फिल्टर करना है, सेम प्रोसीजर, और फिल्टर के फिर आप ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स मोर बिकमिंग मोर क्लियरर. It's nothing but crystallization. So process of purification of a solid, okay, by heating, by concentrating, by making it super saturated, you get crystals pure or जो impurity है निकलता है. Last but not the least, distillation तो आपको मालूम है, is for purification of liquid. Okay, how we do it? We take a distillation flask, उसमें वो liquid रख देते हैं, and then बीच में condenser आता है और वहाँ पे heat करते हैं, ठीक है, and then liquid which is having low boiling point liquid will boil first. Condense first, एक receiver A, we collect the first. Then temperature shoots up. Again, second liquid is taken. Okay, so when दो two liquids है तो उसको fractional distillation भी होता है. Okay, otherwise you can just say distillation for your students. Okay, चलो start. Activities हम लोग जाते हैं, but before that reading have you done? No. चलिए पढ़िए. Jui, पढ़िए आगे. By separating applications, we separate mixture of oil and water. In the extraction of iron from its ore, the slag is removed from the rock. By this method, we leave the molten iron at the bottom. Yes. Slag is nothing but a fusible substance. Extraction में use होता है. Then The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their density. पढ़िए मजे से पढ़ो. How can we separate a mixture of क्या हुआ? How can we separate a mixture of salt and oxygen fluoride? Refer to activity. फिर से पढ़िए क्योंकि हम लोग सब अपना दूसरा पॉइंट पे ये कर रहे थे. नहीं, एक काम कीजिए, जो कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, हाँ पढ़िए. How can we separate a mixture of salt and ammonium fluoride? Yes. Now this particular point, how we separate? Ammonium chloride is sublimable kind of salt, whereas sodium chloride is non-sublimable. तो हम लोग जब heat करेंगे तो क्या होगा? So ammonium chloride will sublime, will go in the form of what is sublimation? Substance converting directly from solid to gas without converting into liquid. Another which is not sublimable. Just like when a person actually what goes away, इन्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? बॉडी उधर ही रह जाती है. और उनका जो एनर्जी है वो कहाँ चला जाता है? सप्लाइंग, सर चले जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नथिंग टू वरी, राइट ना? मालूम है ना? तो क्या होता है, पर्सन स्टिल हो जा रहे हैं. तो बोले सर कहा अभी तो इतना हंसता खेल रहा था वो आदमी, ठीक है, हंसते खेलते अपना वो चला गया. कहाँ पे क्या चला गया उसका? हाँ, उसकी आत्मा चली गई. उसका फॉर एग्जाम्पल वो जो एनर्जी है, सोल है, वो अपना चली, तो वो सब्लिमेबल. तो बोला सर बॉडी वैनिश हो गया. इज इट हैपनिंग एनी टाइम कि बॉडी हैज वैनिश्ड? राइट, नो ना, बॉडी तो उधर दिख रहा था सर, नो, बॉडी वहां पे दिख रहा है, बट is still whatever the energy goes away, sublimable. So people just say sir because he is sublime, okay, he or she is sublime. चलो आगे बढ़ो. ये किसका बॉटल? ग्लास का ही है ना? चलो ठीक है, पढ़ो. Physical activity 2.7. एक मिनट, हो गया कि नहीं आपका? So title. हाँ, टाइटल पढ़ो. हो गया? और पढ़िए, अच्छा पढ़िए. Physical activity 2.7. By sublimation, ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component,
NH4Cl in this case from a non-sublimable impurity or salt in this case, we use sublimation. Some examples of solid which sublime are ammonium chloride, chlorine and anthracene. Yes. पढ़िए. हाँ नहीं एक्टिविटी मत पढ़ो. हो गया वो पॉइंट हो गया. Turn to the next one. Next पढ़ो उसके बाद. The dye black in a single color for activity 2.8. The ink that we use as water as solvent, the dye is soluble in it. As the water rises on the paper, takes along with the dye particles. Yes. A dye is a mixture of two or more colors. Colored component that is more soluble in water that is constant and in this way, colors get separated. Yeah, that is called chromatography. Process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma in green means color. This technique was first used for separation of color, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solute. Yes. Applications to separate colors in a dye, pigments from natural colors, that's from blood. Yes. What is that? From blood? Medicine? Drugs, yes. A person who is a drug addict, उसका ड्रग अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो ड्रग मिल गया कितना और कितना क्वांटिटी में है, हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हैज एक्चुअली व्हाट द पर्सन इज अनफॉर्चूनेटली बट वी कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटो. सो वेरी यूजफुल काइंड ऑफ ओके दे आर यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस. चलो पढ़िए श्रद्धा पढ़िए पूरा दिल से पढ़िए. हाँ मजे से पढ़िए. Separate the mixture of full solid liquids. क्या How- loudly? How can we separate the mixture of two miscible liquids by distillation? It Yes. is for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids. क्या हो रहा है? शार्पनर गिर गया अपने आप. पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेंट्रेट. तुम गिर जाओगे एग्जाम का रिजल्ट में दिखेगी नहीं. शार्पनर अभी गिरा तुमको नहीं गिरना चाहिए. चलो आगे बढ़ो. पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज आवर मिशन इज मिशन टॉपर. ये मिशन है अपना टॉपिंग द स्कूल बिकम स्कूल टॉपर. ओके ये अपना मिशन है. मिशन से हट रहे. चलो पढ़िए श्रद्धा. Miscible liquids that टू मिक्सेबल मींस व्हाट? मिक्सेबल याद रखना ठीक है ना. Sometimes people they say, "Arey sir, he is not mixing with us." He is not mixing with us means he is immiscible. समझ में आया कि नहीं? चलो. without decomposition and have sufficient distance in their boiling points. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 K, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, the apparatus is similar to that for simple distillation, except that a fractionating column is fitted in between. Yeah, that is something which we are going to see higher standard. Fractionating column. चलो आगे बढ़िए. And the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to then condense. Yes, fractionating column is basically what? क्या होता है मतलब मैं आपको मैं बता दूं. इसमें क्या होता है? ये अपना fractionating column. ठीक है? इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग किससे? Distillation flask. ये देखो. ठीक है. अब एक लिक्विड ऊपर से ये वेपराइज हो रहा है और इधर ग्लास बीड्स. यहाँ पे ऐसा कॉटन ऐसा पार्टीशन है which is not allowing these particles to come down. Or these are the glass beads. What actually happens? Understand this. यहाँ से ओके ये कनेक्ट करते हैं थर्मोमीटर ऑलमोस्ट 6000. यहाँ से एक आउटलेट रहेगा जिसपे हम लोग को कंडेंस करना है. ठीक है. ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. Now what actually happens? As one liquid 1 and liquid 2, suppose दो लिक्विड है, इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक का 56 है और दूसरे का 70 है. 14 डिग्री का डिफरेंस है which is very very small. तो क्या होता है जब मोमेंट यू हीट इट, ओके, तो ये देखिए ध्यान से, इसे हीट करेंगे
ये दोनों लिक्विड है ना ऊपर जाना शुरू कर देते। The moment they go up, okay, liquid 1 as well as liquid 2, but liquid 1 is lighter than the liquid 2, so थोड़ा rise होता है ऊपर, liquid 2 पीछे ही रहता है. But what actually happens when it strikes these glass beads, because it's heavier, it gives, it loses a lot of energy to these glass beads. And what happens when it loses, it condenses, it comes down. But in the process, that particular liquid 1, which is just below that, suppose some liquid molecules, they take that energy and they rise further up. तो 1 ऊपर चले जाते हैं और 2 इधर तक जो आया है नीचे गिरना शुरू हो जाता है. काउंटर करंट 1 ऊपर और बढ़ता जा रहा है और ये 2 ठीक है नीचे आता है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस 2 ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता है, सिर्फ 1 ही, because that is heavier. Anything heavier will start falling down. So when they strike the glass bead, okay, what happens? They lose large amount of energy because they are actually what having lesser energy, because उतना जो उन लोगों को 70 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, but 60 तक मिल गया है, but that is not enough for them to overcome that particular energy or move up. So what happens? They move up, but they are not able to rise as 1 is able to rise. Why? Because it is lighter. 2 is heavier. Heavier नीचे आ जाए धीरे धीरे. ये दोनों जाएंगे, but last में कौन जीतेगा? 1. Because वो अपना उसका एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या कर रहे हैं? उसको रोकने में लग रहे हैं, और जब तुम दूसरे को रोकने में लग रहे हो तो तुम क्या हो रहे हैं? तुम्हारा स्पीड कम हो जा रहा है, उल्टा उसका स्पीड ज्यादा हो जा रहा है. That's why never to actually what, when you're in the race with others, concentrate on yourself. अगर तुम दूसरे को रोकने का कोशिश करोगे, but you are forgetting that you are becoming slow in that particular race. I understand. Same procedure यहाँ पे. चलो नेक्स्ट पढ़िए. कौन पढ़ रहे हैं? लास्ट रीडिंग. भरत पढ़ो. How can we obtain gases from air? Air is a homogeneous mixture and can be separated into some components by fractional distribution. If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by increasing the temperature with air. This liquid air is followed to warm up slowly in a fractional distribution column. Yes. Where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. This is usually petroleum industry. हो गया ये, बस इतना बस. Now इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? तो टाइम इज अप. एक्टिविटीज. तो अभी देखो एक्टिविटीज में 2.1 ठीक है. व्हाट्स द नेम? जूही ना एंड श्रेया. SHREY. ये दोनों एक्टिविटी को पढ़ो. देन श्रद्धा एंड अदिति ना. Then next Neha and one absent at Srinidhi. Why? Then this side Aram na? Aryaman and Gunpreet. 2.5 ठीक है. 2.4 किधर है? 2.5 पार्थ एंड नमन. 2.6 कौन है? भरत एंड राजदीप. एक्टिविटी कितने? अवनीश बचा वो आएगा नेक्स्ट टाइम. अब सुनो इधर देखो. 2.6 के बाद 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. कितना है? How many activities are there? 2.10 तक है ना? Now what you'll do? All of you will write down these activities as homework. नहीं सारे नहीं, जो आपके नाम पे लिखा है. ठीक है. वो बाद में उन लोगों को एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा. ठीक है. तो आपको याद करके रखना है ये एक्टिविटी. ठीक है. एंड यू टू राइट डाउन आल्सो. ठीक है. चलो थैंक यू वेरी मच. हाँ. यस मल्टीपल चॉइस.
इसमें नहीं लिखा है, मल्टीपल क्लास में नहीं लिखा ना। दोनों आई टोल्ड यू पेपर नाम लिखा है, जल्दी करो। ब्लूप्रिंट तुमने दिया आराम से। और किसने नहीं दिया पार्ट, जल्दी दो राजदीप तुम्हारा दे दो जल्दी। Kami